Naman. Okay, so what I'll do is I'll share my white screen with you, the whiteboard, my favorite part, and I'm gonna, off my video uh, so that there are no distractions. I keep looking at my own face and then, anyways. Okay, so jokes again. All right, so guys, there are several methods of finding Jogadia. The Panchang, the booklet, you know what? All of you should have a Panchang, first of all, right? There are people who are in western part of the world, they might not be able to get a Panchang, but then people in the eastern part of the world can ship them. I'll ask Naman to do it. What we'll do is we'll try to get the Panchang. Every year there's a new Panchang that comes. Okay, and I'll be shipping that. तो आपको पढ़ना भी सिखा देंगे क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल्स और जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो सब हिंदी वाली काउंटिंग में होते हैं. So we'll teach you that as well because it is very important. An astrologer without a Panchang is nothing. A lot of people will come and tell you, I want to buy a car. Okay, you will say, oh, buy a car on 22nd September. Great. Okay, it's a good day, good nakshatra for you, everything. Okay, you will find out the color from the chart. What are these favorable colors? How do you find a favorable color? Based on the lagna. The Mesh lagna, where the Yog Karak Graha is Mangal, Surya and Brahaspati, where you cannot offer or you cannot request that person to buy a black car because it is a Dev lagna. You can always tell him to buy a white car or a red car. But then what happens? You are a Mesh lagna, but your wife is a Gemini. So now she can take a black car. Okay, you can take a red car. So better neither to take a red nor take a black. Always go for a white car. That is why 99% cars in India will find white or silver. The one car for someone is good, but for the other person can be worst. I mean, you can buy a car with your liking. Okay, I'll buy a black Merc. Fine. You are a Capricorn ascendant. Saturn is very well placed. You can buy a black car. No problem. What about your daughter? She is a Mesh lagna. I mean, if she sits, there's a probability of an accident. You understand? So that's how we calculate things. But then on the same day, I'm getting little diverted. I want to tell you that, in a particular day also, you have to have those 1-2 hours or 3 hours or 4 hours in a day, where you can find out that these are the auspicious ones. Okay, there are people who actually write down the Chogadiya in a temple every day. We have temples here in Ludhiana where the Panditji in the morning will write all the auspicious Chogadiyas. There are 7 types of Chogadiyas and they will write only the best good Chogadiyas. Let me first explain you what is a Chogadiya. Ladies and gentlemen, the way we have divided our year into 2 parts. For an example, Uttarayan and Dakshayan, I just said. Similarly, we have Krishna Paksh and Shukla Paksh. We have divided 15 days of Krishna and 15 days of Shukla Paksh. Similarly, between the sunrise and sunset, okay, sunrise and the sunset, there are some auspicious hours called Chogadiyas. And between the sunset to sunrise, there are some auspicious, because it is not necessary that you can do a good thing in the day only. There are people who do deals in the night, after the dinner, on the drinks, late after the dinner, midnight.
based on their charts, based on the Chogadiya. So this is called the day Chogadiya. Actually, it is Ghadiya, Chogadiya. Why this is called Chogadiya? Because out of the 7, 4 are auspicious. Okay, घड़ी होती ना, घड़ी, घड़िया. So people can ask you कि आज का चौगड़िया बताओ. तो आज की 4 ऐसी घड़ियां आपने बतानी है जो ऑस्पिशियस है. यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो पूछो. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Right? चौघड़िया means the 4 auspicious hours. अब लोग क्या करते हैं, जो तो पंचांग है वो राउंड ऑफ करते हैं टाइम को. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 8 चौघड़ियां होती हैं. 8. और सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक 8 चौघड़ियां होती हैं. टोटल 24 घंटे में 16 चौघड़ियां होती हैं. याद रखिए. ओके, 8 ही क्यों होती हैं? क्योंकि चौघड़िया 8 प्रकार का है. 8 टाइप्स. Okay, all right. Now, how do we do it? What are the types? I'm going to create a table for you. Lot of things are to be assumed. Lot of things are to be adaptive. Adapt करो उन चीजों को. कुछ चीजें साइंस में जैसे अडेप्ट करते हो साइंस स्टूडेंट्स, जैसे आपको अडेप्ट करनी है. 2 प्रकार से चौघड़िया निकाला जाता है. एक होता है एग्जैक्ट चौघड़िया, एक होता है राउंड ऑफ चौघड़िया. पहले मैं आपको राउंड ऑफ बता देता हूं, फिर आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, बिकॉज एग्जैक्ट जो है वो थोड़ा सा राउंड ऑफ के बाद समझ में आएगा. ये कहते हैं कि आप दिन को शुरू करो 6 बजे से, 6 AM. ओके, 6 AM they want to start the day. और एक चौघड़िया जो है उसको 1.5 घंटे का बोला गया है. 1 hour and 30 minutes. एक्चुअली में एक चौघड़िया 96 मिनट का होता है, 96 मिनट का, विच आई टेल यू लेटर ऑन. ठीक है, अभी नहीं, मैं आपको थोड़ा पागल करूंगा. 10-15 मिनट बाद पागल बनाएंगे आप. ओके, सो अभी नहीं. आई हैव टू गिव यू द बेसिक्स. Your basics should be strong so that we can understand the complication. Okay, not right now. Just hang in there. Just listen to me carefully. So, अगर मैं इसमें 1.5 hours जोड़ता हूं तो क्या टाइम होगा? 7:30. 7:30. Okay, so there is difference between 7:30 and 7:30. Okay, so 7:30 AM. Okay. Now I have to make 8 parts, 8 such rows, not the columns. So shall I write here 7:30 AM to how much? 9. 9 AM. So people who've just joined in, we are discussing the topic called Chogadiya, which is finding an auspicious hour in the day. Okay, 9 AM to 10:30. exactly
and from 10 10:30 a.m. to Noon. 12. 12 p.m. noon. Mhm. from 12 p.m. to 1:30, 8 p.m. from 1:30 p.m. to 3. 3. from 3 p.m. to 4:30. 4:30. and from 4:30 to 6. 6. so they assume that by 6 o'clock सूर्यास्त हो जाएगा. ये राउंड ऑफ मेथड है. इसका एग्जैक्ट मेथड पता है क्या है? एग्जैक्ट मेथड सोचो क्या होगा? Based on exact sunrise time and sunset. Daily. एग्जैक्ट सनराइज अच्छा. टाइम निकालो, एग्जैक्ट Sunset time. सनसेट डिवाइड कर दो 8 से. 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. Am I making some sense? Mhm. Simply take the sunrise time, take the sunset time, and divide those hours into exact 8 parts. And then write this range that you see on the screen. Guys, any confusion? Can I move ahead? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes. Great. Now, there are days. They're called the Vara. Ravi, Vara. Var means the energy. So that Var has the energy of Surya. Okay? Ravi Vara. So I'll write here Sunday. Or you can write the Ravi Var. We are in the English speaking world, so we're writing Sunday. Okay? And then we'll write here. What is the next day? Monday. Monday. Superb. Next? Tuesday. Tuesday. Wow. You guys are amazing. Then, now Wednesday. nobody is speaking. Wednesday. Thursday. Friday. Okay. In Punjab, we called it Thursday. Okay, you call it Thursday. And then Friday. Mhm. And now Shani Devta is called Shanichar Vara, Shanivara, Saturday, and Saturday. So you can call it many ways. So we can write Saturday. Okay. Yes, no? Can I write just Sat? Yes. Okay. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. How many of them? 7. 7? You have 7 days, right? Yeah. Is it possible to have 8 days? It is. 7 plus 1. Okay, anyways. Everything is possible, no? जब काबिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है. Okay, so Sunday. Now there are 8 types of hours that are written in the Panchanga. And those hours are, the first one is called Udvega. Okay, should I write in Hindi or English? Udvega. English. Hindi. Oh, Both. no. You guys are crazy. You want to write in both? Okay, I'll write in both. No worries.
The people who paid me, right, for writing in Hindi, then people who have paid to me for writing in Hindi, so I have to write both. Okay. Udvega. 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 Okay. Okay. Then we have मंडे का जो पहला है वो है अमृत. ट्यूसडे का इट्स रोग. पहला. वेडनेसडे का इज लाभ. थर्सडे is Guruvar is called Shubha. Friday is Chala. And Saturday is called the Kal. Kal. Okay. Now, once you've understood this, you have to understand what is Udvega, what is Amrit, what is Rog, Labh, Shubh, Chal, or Chal is also called Char. Okay, a lot of Panchang will call Chal as a Char. Okay, Char, Char, or Chal. Okay, just give me 1 second. I need to shut the door. The children are. Okay, now the 4 chogadiyas that are good, I'm gonna circle them with blue, and the 3 chogadiyas that are bad, I'm gonna circle them with red. The name that you see good are obviously very good. You can see them from the name. Amrit is a good word, right? Hmm. Is Rog a good word? No. No. sir. Labh is a good word, right? Yes. Yes, sir. Shubh is a good word, right? Yes. No? Yeah. And Chal is also a Chal. good word. Good. The bad words are Udvega, Roga, God. and Kala. Yes? Okay. Now, so you know that the first Chogadiya of Surya is bad. Hmm. Mangal. Now don't consider the Vara, consider the planet. Okay, consider the planet. So can I write here, what color? Yeah, green.
Can I write here sun? Can I? Yep. Can I write here moon? Yes, sir. Mars? Mercury? Jupiter? Venus? And Saturn. So the Chogadiyas of Sun, Mars, and Saturn are not auspicious, technically, okay? And the Chogadiya of the Moon, Mercury, Jupiter, and Venus are auspicious. The other one are not auspicious. What do you find from here? What do you find from here? You find natural Benefits. Benefits. and Natural malefics. oh, Natural benefits. you guys are superb. Okay. Now, from wherever we have the last Chogadiya, which is Kala, can somebody count 6 Chogadiyas from there? 6. 1. This is the last one, okay? This is the last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shubh. Okay. 6. Wherever they finish, the next Chogadiya will come here. Which is this? Come here. Chala. Yes. Hmm. And then after Chala, it will be the same procedure. Kala. Okay. And what after Kal? Udvega. And then Amrit. Amrit. Rog. And then Love. Roga. Love. Amrit. Love. Labh. Shubh. Shubh. Mm-hmm. Now, yes, Srinivasi, you have a question? Yeah, one question, sir. Why is any significance for 6? See, for the day, they have counted 6 Chogadiyas, and for the night, they count 5. Okay. For the day, if you have to count 6 Chogadiyas, and for the night, you have to count the 5 Chogadiyas. The significance is very, very simple, that I have told you that you need to adapt these things. Okay. There are some astronomical calculations that Muni Parashara had done, and he found out that we'll have to find out the 6 Chogadiyas from where it is during the day, and the 5 Chogadiyas they need to count in the night. You want me to research further, because nothing is given in the Parashara Hora Shastra. I'll try to find why 6 and 5. Okay, sir. No problem. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. All right. Now you have Shubh here, right? Love. So we have Shubh here. So Shubh से आगे कितने count करने हैं? 6. 6. So count करो हाँ। जरा. Love. लाभ आ गया. Hmm. लाभ के बाद यहाँ क्या आएगा? शुभ. Hmm. हम शुभ को बड़ा मिस कर रहे हैं आज. कहाँ है हमारा शुभ? शुभेंद्र. चल. फिर
काल, काल, फिर उद्वेग, अमृत और रोग। अमृत, अमृत, रोग, 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 फिर अमृत, हम्म, उसके बाद रोग, लाभ, शुभ, चल, काल, उद्वेग, उद्वेग, काल, काल, उद्वेग, उद्वेग, अमृत, रोग, अमृत, लाभ, रोग, चल, लाभ, शुभ, शुभ, चल, चल, शुभ, हम्म, चल, काल, फिर उद्वेग, yes, अब अमृत, रोग, लाभ, अब रोग, yeah, लाभ, शुभ, चल, अब तो आप बताओ, सो गए? का, काल काल, उद्वेग, उद्वेग, अमृत, और अमृत, इसके बाद गुड नाइट। उद्वेग, उद्वेग, अमृत, अब लास्ट में उद्वेग, yes, अमृत, रोग, रोग, लाभ, शुभ, चल, काल, लाभ, शुभ, चल, चल, काल, काल। Now, what is उद्वेग? Understanding what is an उद्वेग, what is an अमृत, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, that's the most important thing. Okay? उद्वेग जो है वो सूर्य को बिलोंग करता है। उद्वेग को शुभ नहीं माना गया। यहां पर उद्वेग में कंफ्यूजन जो है वो पैदा होती है। उद्वेग के अंदर टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा होता है। बट सिर्फ एक बेनिफिट है उद्वेग के अंदर, सिंस इट इज अ चौगड़िया दैट बिलोंग्स टू सूर्य देवता, आपको जितने भी सरकारी काम है, आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेल करनी है, आपको कोई भी सरकारी काम की अप्रूवल लेनी है, guys, this is the time. This is the time. This is the time where you can get
this thing done. Monday morning, 12 से 1:30 बजे के बीच में, 12 से 1:30 के बीच में, ऑन मंडे मॉर्निंग आप लाइफ साइकिल नोट कीजिएगा, सरकारी काम होंगे। ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग 7:30 से लेके 9 बजे के बीच में आपके सरकारी काम होते हैं। वेडनेसडे को लंच के आसपास आपको सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं ये? Yeah. Yes, sir. यस, नो, मे बी। Mm-hmm. Yes. किसी को ना समझ में आ रहा हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? सर गुरुजी इसको जब अच्छा नहीं मानते तो लिटिल कंफ्यूज्ड। आप अच्छा नहीं मानते, लेकिन सरकारी कामों के लिए अच्छा माना गया, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस चौघड़िए का स्वामी सूर्य है और सूर्य गवर्नमेंट है। ओके। अगर आप कॉर्पोरेट में कोई काम करना चाहते हो, कॉर्पोरेट को भी ईमेल करना चाहते हो, इट इज नॉट ऑस्पिशियस थिंग, नो। अगर आप सरकार से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इट्स अ गुड थिंग। रचित जी, यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। यस, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि सपोज अगर आपको कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क करना है ऑन अ मंडे, से फॉर गिवन दिस टाइम, बट एज पर योर नवतारा सिस्टम दिस मंडे पर्टिकुलर कम्स इन विपत or not any other favorable nakshatra, then would you still do it? See, it's a very simple question. First of all, I'll find out the appropriate nakshatra, because we are coming from top to bottom, right? On the top, the priority of the nakshatra is higher than the priority of the Chogadiya, because Chogadiya Udveg we are finding every day, no? Only the time frame is changing. Okay, so if it's a favorable day, say as in like Mitra or Ati Mitra, so regardless of the Chogadiya, you can do the task. No, I didn't say No. that. No, I said that it is a favorable day. Suppose Thursday is a favorable day. Okay, and you want Okay. to have a government issue resolved. So you have to find Udveg there. 9 to 10:30. Okay. ठीक है sir, got it. Thank you. Okay, Yeah, thank you. good. So, guys, am I making some sense to everyone, right? Yes. Okay, because if somebody asks you what is a Chogadiya, my students should know, and the real Jyotishis know it. People who are not real astrologers, they would not even know what is a Chogadiya. They will never use it. They will never know it. You should be synchronized with the Chogadiya. Now there is a catch. Every formula has a catch. If your favorable Chogadiya falls or coincides with Rahu Kal, then it is not auspicious. If a favorable Chogadiya coincides with Rahu Kalam, it is not considered auspicious. Do you want me to repeat or make you understand this statement? If you want to know what is the Rahu Kal, please go on my YouTube channel and watch the video of Rahu Kalam after you finish the class. I have a detailed video on Rahu Kal on my YouTube channel. Okay? Now, what is Chal or Char? The Chal or the Wait. Char, sorry, who is this? Sorry, no, go ahead.
Okay. Is a Chogadia in which it's a Venus Chogadia. So what is Venus, by the way, guys? Luxury. Hmm? Luxury. Luxury. I want to buy a car. Okay. You want to buy a car. You want to buy जो लंबे समय तक चले आपके साथ. You want to buy a shop. You want to buy a home. You want to House. sign paper, registry. Want to buy a shop. Want to sign papers of a business shop or a business office. You want to purchase a car or a private jet. Okay. Why can't we? Okay. So what to do? Which one? The Char Chogadia. शुक्र है ना, शुक्र लग्जरी देगा. आरबीआई की टीम पहली टीम होगी जो प्राइवेट जेट लेगी. सारे एक साथ बैठ के जाएंगे. सही बात है सर. वो बोला सर ने भांग पी हुई आज. नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारी तबीयत ठीक है थोड़ी. सभी पैसे डालेंगे तो हो जाएगा सर. हाय. डीजल इंजन से थोड़ा चलाना सर. चलो एनीवे, दुबई एक्सपो से अमिता जी को बोलेंगे ले देंगे हमें, वहां पे तो जहाज बिकते हैं. एनीबडी इज गोइंग टू दुबई एक्सपो? नो वन? ओके, यू कैन सी इट ऑन द मोबाइल फोन, नो नीड टू गो. ओके, सो चल और चल, एंड चल से और क्या समझ में आता है? ट्रेवल. movable thing. Movable. चलायमान भी होता है सर. करेक्ट. जी जी. ट्रेवल. अगर आपको ट्रेवल करना है, you want to start a travel that should give you result, that should be beneficial. How will you do it? In the Chal Chogadiya of that Vara. शनिवार को बेस्ट चौगड़िया जो है चल के लिए वो 12 से 1:30 बजे के बीच में. सैटरडे. यू कैन परचेज अ कार इन द आफ्टरनून. अब जैसे सपोज अगर आपको गाड़ी खरीदनी और आपको गाड़ी वेडनेसडे को खरीदनी है, तो आप 3 से 4:30 के बीच में डिलीवरी दीजिए. 3 से 4:30 के बीच में पोस्ट लंच जाके पेपर साइन करिए. ओके. अमृत. What is the word Amrit? What is Amrit? Life giving. Pure. Life giver. Life giving, right? Next, Life next. giver, right? Makes अमृत you के पीछे ही immortal. तो झगड़ा हुआ सारा, नहीं? Makes you immortal. अमृत क्या है? Makes you immortal. अमृत के पीछे तो सारा झगड़ा है, कलेश. So, if you want to do a गोद भराई, देखो आपके पास आएंगे क्वेश्चंस की गोद भराई करनी है गुरुजी हमारी बहू रानी की, तो आप उसके लिए अमृत चौगड़िया ढूंढेंगे. डिलीवरी करवानी है. आजकल सी सेक्शन से लोग करवा देते हैं, डेट एंड टाइम प्लान्ड होता है, तो अमृत चौगड़िया. सर्जरी करवानी है आपको, कोई भी मेडिकल ऑपरेशन सक्सेसफुल कि दोबारा ना हो, ठीक हो जाए आप. कोवा वैक्सीन लगवानी है, कोवा शील्ड लगवानी है,
लाइन में लगे बिना एक्स्ट्रा पैसा देकर कि इस टाइम फ्रेम में ही लगवानी, पंडित जी ने बोला, साथ ही डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे आपको। नंदिता जी Sir, हंस रही हैं, हंसी क्यों रोक रहे हो आप, हंस लो। No, I'm in deep thought. I'm going to ask a question later ओके, about, yeah, it's just, yeah. नो नो, it's वी a वोंट lot. चार्ज यू इफ यू लाफ, राइट? Yeah. so Okay. sir, we can also do marriages and engagements also in Amrit. वो शुभ में करेंगे, Okay. वो शुभ में करेंगे। शुभ में करो, शादी विवाह सगाई रोका पिटाई कलेश वो सब शुभ में करो। एंगेजमेंट करो, रोका करो, प्रपोज करो। सभी कौन हंसा, सुनंदा जी से? चलो, शादी विवाह कोई भी मंगल कार्य जो है, जिसको मंगल कार्य कहा जाता है, पैशनेट कार्य। मंगल कार्य मतलब पैशनेट, डिजायर वाला कार्य, वो तो देवगुरु बृहस्पति ही करवाएंगे ना, आप समझ नहीं रहे हैं। विवाह के जो जीव कारक हैं, हस्बैंड के जो जीव को जो सिग्निफिकेटर हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। Right. तभी तो मैंने ऊपर प्लैनेट्स लिख के इसको थोड़ा लॉजिकल बनाया, है ना? तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब काल क्या है? काल ऑब्स्टेकल हो गया सर। Destruction. Losses. काल है डेथ। Yes. किसी की मृत्यु ना हो रही हो ना। गीता का कौन सा अध्याय पढ़ते हैं? गाइस कम ऑन, गीता का कौन सा अध्याय पढ़ा जाता है? 12. हाँ, पहले यही 12. बता दो कितने है, कितने अध्याय, यही बता दो। 18. 18. गरुड़ पुराण तो नहीं पढ़ा 18 जाता? 700 18. 17वां अध्याय पढ़ा जाता है। 17वां पढ़ दो, 18वां पढ़ दो। ओके, वो पढ़ के जल पास रखो और वो 2-4 ड्रॉप्स गंगा जल की मुंह में डाल दो, मुक्ति हो जाती है। तो वो काल में कर सकते हैं आप। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप जिंदगी में दोबारा देखना ही नहीं चाहते, एनी सॉर्ट ऑफ सेपरेशन, वो हमें कब करनी चाहिए? काल। के शुभ में। डिवोर्स किस में करोगे? अगर डिवोर्स अगर करना है तो काल में करोगे ना। इफ यू वांट टू डिसॉल्व अ कंपनी, सी देखो ऐसा है, हर एक जो नेगेटिव है ना, अगर आप आरवीएन हो तो आप हर नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालना सीखोगे। इफ यू वांट टू डिसॉल्व अ कंपनी, यू वांट टू साइन द डिसोल्यूशन डीड, व्हेन शुड यू साइन? टेल मी। काल, or just conclude it forever. Separation for the good. Getting rid. Separation for the good. You bought a car, you want to sell a car. You want that person to come to you next day and tell you've given me, cheated me, you've given me a wrong car, take it back. In India, that also happens.
So if you're a business person and you sell products, do you want them to be sold in that time frame? You can, but then that is a permanent separation, right? Right. I mean, I think if I would do it, I will do it in lab, because for me, Yeah. profit is more important. I see. Okay. Yeah. We want the customers to come back also. Again, Yeah. Yeah. True. they should not just take it and then they never come back. Right? So I'll do it in lab, Hmm. where I get the profits and I get a lot of customers again and again, again and again. That is labha. If I have to purchase shares, stock market, I think I should do it in the lab, right? Hmm. So all these stock exchange deals you should do in the lab. Udveg is government. Amrit is life-giving. Okay. Now what is rogue? This rogue is used for black magics. जितने भी तंत्र विद्या है वो रोग चौगड़िया में की जाती है. इसी लिए मंगलवार की जो इवनिंग होती है ना, वो बहुत डेंजरस इवनिंग होती है. इसीलिए हम हमारे माता पिता हमेशा हमें मंगलवार शाम को मंदिर जाने को जरूर कहते हैं. हनुमान जी पे माथा टेको. जितने भी नेगेटिव उपाय हैं वो मंगलवार शनिवार को करवाए जाते हैं. अगर काटना हो, तोड़ना हो, करना हो. स्पेशली अगर डिफेंस करना हो, काटना हो, तो उसकी शुरुआत मंगलवार से. लाभ you've covered, शुभ you've covered, चल you've covered, काल you've covered. This is called चौगड़िया. सर ये किसी पे भी अप्लाई हो जाएंगे, किसी भी बंदे के ऊपर? देखिए, आपने फिर से वो सवाल पूछा जिसका जवाब मैंने इस कक्षा की स्टार्टिंग में दिया सुनील जी. मैंने कहा कि हम टॉप डाउन अप्रोच में हम माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं. माइक्रो लेवल पे जाने का मतलब है आप शुरुआत तो कुंडली, कुंडली के बाद कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, फिर अपने नक्षत्रों के बेस पे ही करोगे ना. जी सर. एंड में जाके हम उस नक्षत्र का दिन हमें मिल गया तो हम उस दिन में वो घंटा ढूंढ रहे हैं कौन सा है, दैट पर्टिकुलर आवर. तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है बताइए. ठीक बोल रहे सर आप. So, sir, जी. a use case would be if I want to buy a car, I would go to my Navdara system, which I've already defined for myself, find let's say I want to buy, I would find a good day. And then for that particular day, I would come to this chart and find the time for Venus, right? Right. Okay, so that's the use case for me personally. It starts with your Navdara system, find a good day, and then appropriately do the task based on this chart. This chart doesn't change. No, it doesn't change. Got it. Okay, thank you. Okay, how to make the night? So for the night Chogadiya, it's very simple. I said 6 places, I said 5 places. You just have to do one thing.
यू हैव टू 6 PM से आगे आपको यहां से शुरू कर देना, ठीक है? 6 PM से 7:30 PM. Yes, no, maybe. Mhm. Yes, sir. यहाँ पे लिख दूं नाइट चौघड़िया, रात का चौघड़िया निकालना। Yes. रात 6 PM to 7:30. 7:30 PM. Yeah. What is happening? PM. 7:30 PM to 9 PM. ठीक है? लास्ट वाला कौन सा था? काल, यहां से 5 गिनो आगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा Two. शुभ। 5 करके, 5 काउंट करने के बाद जो अगला है, उधर 6 काउंट कर रहे थे, रात के 5 करने, बस। शुभ के बाद चल, Chal. चल। अब Call. हम्म Call. काल, उद्वेग, उद्वेग, Wake. उद्वेग। फिर Amrit. अमृत, फिर Rog. रोग, रोग, फिर Love. खत्म हो गया यहाँ पे। So. 1 2 3 4 5। क्या आएगा यहाँ पे? Amrit. अमृत, फैंटास्टिक। चतुर बच्चे हैं सब। अमृत के बाद रोग, रोग, Rog. लव, then लव, guys, you still want me to make the complete table? No, sir. No. नो सर, No, sir. शुभ, चल, काल, काल एंड उद्वेग। उद्वेग। सो आप लोग पूरा टेबल बना सकते हो मेरे लिए? Sir. यस, यस, दिन का Yes. चौघड़िया और Yes. रात का चौघड़िया। यस। Yes, sir. यस सर, अब आप लोगों से एक सवाल है, जो मेरे डेली डिस्कशन ग्रुप में योगी जी पंचांग डालते हैं, चौघड़िए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? उस दिन का चौघड़िया केवल शुभ चौघड़िए। कौन कौन से चौघड़िए आप डालोगे उस दिन? कैसे कैलकुलेट करने हैं? सनसेट, सनराइज कैलकुलेट करके उसको 8 इक्वल भागों में डिवाइड करके इतने बज के इतने मिनट, यानी कि 5:55 AM से लेकर आगे 1.5 घंटा, इतने इतने मिनट, जो भी 8 डिवाइड करके आएगा, 8 पार्ट्स में डिवाइड करके, उसमें मुझे अमृत, लाभ, शुभ और चल चारों के चारों रोज डालने हैं। कौन डालेगा? या एक काम करिए, रोज की एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगाइए। हर एक की बारी 30-40 दिन बाद आएगी। जो नहीं करेगा वो चुपचाप से USD 100 मेरे खाते में डाल दे। सिंपल। इंडियन करेंसी में 5100 है, वैसे USD 75 है। मेक मी रिच। Yes, no, maybe. ठीक है सर। Nobody is saying yes. Oh my God. Why? I can do it, sir. We can do it, sir. Why will you do it? You pay already me doing it. 5,000 USD every month. You pay me. You do it. Why you do it? Let others also do it. Yeah. Sure. Okay.
Yes, right? sir. You can do it. Done. We sir, can do done. it, right? So, but then who will make the list? So, do we have Simrat ji here? Oh, no. Oh, she's not there. Yes, sir. She saw Sunday message ki she will not be able to join today, I think. She is there, sir. Hey? Okay. हाँ है. Okay. I कहाँ पे है सिमरत जी, कहाँ है? सर मैं यही हूँ वो ओके आई ओके एम ओके जस्ट ओके। अच्छा अच्छा, आप लिस्ट बना देना कि किसने किस दिन चौगड़िया डालना है। श्योर सर आई डू दैट ओके ओके, थैंक यू म्यूट कर लो आप। समझ में आ गया सबको? इजी टॉपिक था? Yes, sir. यस तो मैंने तो इजीली सीखा नहीं था, आई स्वेयर। मेरे को तो बहुत वक्त लगा था इसको समझने में। इट wasn't that easy for me, जितना आसान लग रहा है। बहुत sir, वक्त can I say something? या प्लीज। In fact, sir, हमेशा हम लोग राहु काल देखते हैं. I think this topic is so important, was so important. Thanks for teaching us that it gives a positive aspect. मतलब हम Yeah. दिन में ये नहीं देखते हैं कि कब क्या नहीं करना है, but actually ये देख रहे हैं कि कौन से टाइम में क्या करना है. क्या कर सकते हैं? Exactly, क्या कर सकते हैं. बिल्कुल. So it's really a positive approach to the whole subject. Yes, fantastic. Yes, Payal. So I have one question. Like during when we check the day chart, so some Abhijit with Rahu Kal, that also turns up when we see the whole chart for the day. So Yeah. what is that all about? Because I mean, normally people say Abhijit is a very good and auspicious time during the day. अगर कुछ नहीं 12 समझ से में 1 आ के रहा है, बीच में, yes, around the, I mean, roughly 12 around से that 1 time. के बीच में रोज अभिजीत होता है। अगर कुछ So समझ में नहीं आता Sundays, तो 12 से 1 के so बीच। Sundays तो होता भी नहीं है अभिजीत. That is what I'm saying. That's a wrong calculation. That's a wrong way of doing it. Follow Chogadiya. Okay. So, but then why? I mean, normally it is said that कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो anything that you want to do it under Abhijit. You have your answer yourself. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, you have the answer yourself. So it's उन्होंने not एक ऐसे, auspicious. yeah, it can be Udveg, and you are going to do a roka. Is समझ that लो. okay? No, it is not okay. No, Okay. it is not okay. No. Okay. अगर आपको काल में कोई फोन करके बोलता है कि कोई सीरियस है, क्या होगा? Loss. Yeah. समझ गए आप मेरी बात? Yes, sir. आपको कोई अमृत में फोन करके बोलता है कि बंदा बड़ा सीरियस है, क्या होगा? बच जाएगा ना? Yes, Mm. sir. आप समझ रहे हो सारा दिन सिंक्रोनाइज रहने का मतलब क्या होता है? Yes, sir. So, Yes. then why Yeah. does Abhijit is so like people? I mean, what See, is the Abhijit purpose of Nakshatra is the Abhijit? last nakshatra that I'm going to teach you. So once I teach you Abhijit, you will be clear about the Abhijit concept. You know what? It is like Neptune and Pluto. Krishna has thrown him away from the orbit, but it still has that effect, which I teach you when I teach you the Abhijit Nakshatra. Rachit ji, you have a question? Yes, sir. So I'm just seeing this, Trick Panchanka app. Yeah. So when is it that you use, this Hora Mahurat, like Saturn sluggish, Jupiter fruitful, Mars aggressive? Yeah. That is the So- Hora concept. Okay. So we only need to see the Chogadiya Mahurta, not the Hora Mahurta. No, even the best accurate, because you know what, the Hora is 1 hour, and it is, the first hour of that day is that the hour of that particular planet. But Chogadiya is more accurate. Okay. Just make a Chogadiya table every day and just share the auspicious hours for the day Chogadiya and the night Chogadiya. And if somebody can do it, the unauspicious 3, which is Kal, Udveg, and Roga, which we usually don't share. Okay. We only So that share there is these no- 4.
So there is no need to see this Hora Mahurta, Lagna Mahurta, and Gauri Panchanga. Exactly. Just look at the Chogadiya and you are there. Okay, sir. Thank you then. Thank you for the clarification. Thank you. That is why I took this topic to, explain you the concept. No, that's So- great. It was. I also wanted to request you for this because we always get confused. When we see the Trig Panchang, which Mahura to follow actually. Just follow the Chogadiya. Yep. 100% accurate results. Thank you, sir. So guys, this is it from me today. Okay. And I think मैं अपनी वाणी को विश्राम दे सकता हूँ. We have a Vastu class coming up in 1.5 hours, 9:30, right? Okay. And just message me your availability in the class so that we can take a call on it. All right. And thank you all for your lovely wishes and prayers that you've done for me. I think you could realize I feel better and energized, right? And I think this is all your prayers and tons of, blessings that you send me across. And because, I can reciprocate the same to you people as well. Because your blessings, they come to me, they multiply exponentially, and then I send it back to you. So this is how the circle works. This is how my Guruji's told me. That you send me the blessings, I'll just exponentially multiply that and then send it across to you. That's what happiness is all about, isn't it? If you are sad, just start fake laughing in between the people who are laughing. You'll actually start feeling happy. And if you fake start shedding tears, you'll start feeling sad. That's law of nature. Okay. Anyways, I don't know whether I'm making some sense or not, but I think I'm making a lot of sense to myself. Okay. All right. So if you have any questions, ask, or then we can conclude the class. Okay. I think it is all done. Let's say Om 3 times and 12 times Om Guru. Om Guruve Namah. 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 Ayushman Bhava everyone. Tejasvi Bhava. Vijay Bhava. Jahi Vidhi Rakhe Ram. Tahi Vidhi Rahiye. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Krishna, sir.